Good morning to you all. You must have heard a very famous saying that change is the law of nature. Yes, today we shall discuss about different kind of changes around us. Every day you came across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, आपकी मम्मी ने आपसे कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक बनाने को जरूर कहा होगा। ऐसे में आप पानी में चीनी को घोलते हैं। ये एक तरह का चेंज है और उसी प्रकार से दूध से दही का बनना भी एक प्रकार का चेंज ही होता है। So student, in this chapter we shall discuss about the nature of these changes. But before interpretation of these changes scientifically, let us understand the term involved in the chapter. So here are the terms. First, physical properties. Second, chemical properties. Third, reversible processes. And fourth, irreversible processes. So the first property is physical properties. Properties such as shape, size, color and state of a substance are called physical properties. For example, when a sheet of paper is folded, its shape changes and this is an example of change in physical property. जब हम किसी पेपर को मोड़ते हैं तो उसका शेप बदल जाता है लेकिन पेपर में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। Second property is chemical properties. The internal properties such as reactivity with other chemicals of a substance are known as chemical properties. For example, curd is the product of milk, but the internal properties of milk and curd are completely different. मतलब दूध और दही दोनों एक दूसरे के ही रूप होते हैं, लेकिन मिल्क एकदम लिक्विड होता है जबकि दही जेली के जैसा सब्सटेंस होता है। सो यहाँ पर दोनों की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंजेस होती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड द थर्ड वन इज रिवर्सिबल प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस which can be reversed are called reversible. For example, a folded sheet of paper can be unfolded. So this is a reversible process. And next is irreversible processes. The processes which cannot be reversed are called irreversible processes. For example, when a milk turns into curd, it cannot be changed back to milk and hence it is an irreversible process. बच्चों, हम जानते हैं कि दही दूध से ही बनती है, लेकिन अगर एक बार दूध से दही बन जाती है तो हम दही से दूध को वापस नहीं बना सकते। तो ये एक तरह की इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। Now it's time to understand the kind of changes. So student, broadly all these changes are categorized into two different kinds. First is physical change and second is chemical change. The first type of change is physical change. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substances is formed. For example, melting of ice and stretching of rubber band. बच्चों, आइस का मेल्ट होना ये एक फिजिकल एग्जांपल है, क्योंकि जब आइस मेल्ट होती है तो उसके स्टेट में चेंज आता है। आइस सॉलिड फॉर्म होता है और उसके मेल्टिंग के बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह का सभी चेंजेस फिजिकल चेंजेस होते हैं। और एक बात जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि आइस भी वाटर का ही फॉर्म होता है और लिक्विड भी वाटर का ही फॉर्म होता है। Here are some more examples of physical changes: dissolution of a solid in a liquid, melting of wax, melting of ice into water, freezing of water, change of water into vapor or vaporization, change of vapor into water or condensation, and stretching of a rubber band. In all the changes mentioned above, only the physical properties of the substances are undergoes a change. Hence, all these are example of physical change. Let us now consider the other kind of change, that is chemical change.
A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. For example, rusting of iron and burning of candle. So students, आपने देखा होगा कि आयरन से बनी हुई चीजें जब काफी समय तक खुली जगहों में पड़ी रहती है तो उस पर रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब आयरन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन या मॉइस्ट के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमको रेड ब्राउन कलर में दिखाई देता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। सो रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। Here are some more examples of chemical changes like rusting of iron, burning of a candle, reaction between vinegar and baking soda, burning of magnesium ribbon, and reaction between solution of copper sulfate and iron. In all these changes which are mentioned above, the chemical properties of the substances are undergoes a change. मतलब इन सभी examples में जो सब्सटेंस होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, इसलिए ये सभी केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? एंड योर ऑप्शंस आर ए रस्टिंग ऑफ आयरन, बी combustion of magnesium ribbon, C burning of candle, and D melting of wax. And your answer is melting of wax. And your second question is which of the following is a chemical change? And your options are A twinkling of stars, B cooking of vegetables, C cutting of fruits, and D boiling of water. And your correct answer is B cooking of vegetables. The third question is a chemical change may involve, and your options are A change in chemical properties, B change in physical properties, C both of the above, and D none of the above. And your answer is A change in chemical properties. And your fourth and last question is a physical change may involve, and your options are A change in chemical properties, B change in physical properties, C both of the above, and D none of the above. And your correct answer is B change in physical properties. Practice makes perfect. You must have heard this. So it's time to practice. Try to solve the following questions. And your questions are, first question is melting of wax is a change where a solid changes to liquid state. Give one more such change which you observe in your surroundings. And your second question is what kind of change is shown by tearing of paper? So student, we will meet in our next video and we will discuss about some more examples of physical and chemical changes in detail. Till then, take care and stay home and stay safe. Thank you for watching.